Good morning, students. So we will discuss about the map work today. What will come in here this exam, and it will be your for final exam also. So we will discuss about map work. So what is given, you will see. This is the book name Fundamentals of Human Geography. From this chapter 1 there will be no map work will. Chapter first में से कोई map work नहीं आएगा. Chapter 2 to 4 there is they have asked only the largest country in each continent in terms of area. It means एरिया के अकॉर्डिंग हर कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा कंट्री बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट वी विल डिस्कस. ओके, देन नेक्स्ट इज गिवन चैप्टर 5 to 7. 7 चैप्टर यू नो वेरी वेल. 6 चैप्टर वी हैव रिड्यूस्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये चैप्टर आपका कर दिया गया, तो इसमें जितना भी दे रखा है ये सारा नहीं आएगा. देन नेक्स्ट इज गिवन चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़. फ्रॉम दिस चैप्टर this is asked major areas of nomadic herding, major area of commercial livestock rearing, major areas of existing commercial extensive commercial grain farming and mixed farming of the world. These things will be asked in the exam. So this first the largest country in the each continent of the area, and then this chapter 5 major areas of nomadic primary activities that we will be asked. Then next is given chapter 8 and 9 that we have already cut down, वो जो हमने काट दिया है. इसमें अब लास्ट में सिर्फ आपका एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. चैप्टर 10, दिस चैप्टर mega cities of the world, this will not come in exam. That chapter 8 and 9 we will not discuss about this. Chapter 10 mega cities of the world that we will discuss. In mega cities they have asked only 5 or 6: Tokyo, Delhi, Shanghai, Mumbai, Sao Paulo. These are asked, so we will discuss about these only in the mega cities of the world. So in map we will discuss about the first, we will discuss about the largest country in each continent and smallest. Okay, then we will discuss about the this primary activity chapter, agriculture, types of farming in different areas, and then we will discuss about the last topic mega cities of the world. So these things we will discuss today. Now we will start about these things mega city, this we will discuss about this map work. First it is given about the first it is given about smallest and largest country of the world, that you will see here they have given the symbol. Here they have given the symbol of smallest and highest. So it is given that we will discuss about the highest and smallest. So these all are given in this the map. For example, in Asia that is given Bhutan, then Australia also given, Vanuatu. Then next is given about the Brazil is the largest country in South America. Then Trinidad and Tobago is the smallest country. In same way other countries are also given here. United States of America, then Canada. So these are the countries given. In North America, Canada is the हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंट्री है. यूनाइटेड स्टेट्स छोटा है उससे. दो ही कंट्री मेन है यहाँ पे, दोनों के अंदर दिया हुआ. इसी तरीके से आपका यूरोप के अंदर है. यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा है वो फ्रांस है. उसके बाद में स्मॉलेस्ट है वो आपका स्लोवाकिया है. दीज ऑल कंट्रीज आर मार्क्ड हेयर. देन नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द अफ्रीका. अल्जीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एंड स्मॉलेस्ट इज़ मॉरिशस. ये छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मॉरिशस आपका हो गया. देन नेक्स्ट इज़ गिवन अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री. न्यू कैलेडोनिया स्मॉल कंट्री, ये यहाँ पे दिया हुआ है. सो दीज थिंग्स यू विल रिवाइज अबाउट दिस. राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट इन ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट द given about this smallest and largest continent. Now next we have already discussed about the primary activities map. Primary activities का मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. These maps we have already discussed.
Areas of nomadic herding, they all areas are shown here. You can see these tundra region of Eurasia. You will remember these name. Where are these areas? Okay. So you will write down when in exam asked a major areas of nomadic herding. So you will mark that area in this. Okay. Write down the name of that area because it will come in identify. आपके एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करना आएगा, लोकेट करना नहीं है. आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी वो जगह दी होगी, उसका नाम लिखना है आपको सिर्फ. यू हैव टू राइट डाउन द नेम. तो एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया हुआ एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, दैट इज ऑल्सो गिवन इन दिस. Then next is given areas of primitive subsistence agriculture, that is also you have discussed. I have given these map in your when we have discussed the chapter areas of intensive subsistence agriculture. Then areas of plantation agriculture, all we have discussed this. So these you will discuss or you will write down in your notebook about this and do map work. Now next is given about the mega cities of the world. In mega cities we have discussed only some selected. First is given Shanghai. This is in China. Shanghai, it is in China. It is in China. Shanghai, it is given here. Then they have given the Delhi and Kolkata or Mumbai. They, you know very well about this. Then they have given Tokyo. It is given in Tokyo in Japan, capital of Japan. Then next is given Sao Paulo. This is in Brazil. It is Sao Paulo here. Then next they have given about the London, that is also given here. Paris also given here. New Orleans, Los Angeles, New York, these all are given. So I have shown in the map also, map work. So you will check and these you will mark in your world map. ये आप जितने मैंने आपको दिखाया था उसमें वही आपको करने हैं. तो आपका मैप वर्क में दिया हुआ था फर्स्ट पेज पे, वही आपको इसके अंदर क्या करना है, मार्क करना है. So this is the map work. Only this you will revise from this chapter. First is only the highest and largest country of each continent. Then next we have discussed the primary activities में से जो आपका मैप है वो याद करना है, रिवाइज करना है. और लास्ट चैप्टर में से मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मेगा सिटीज़ स्टार्टिंग में मैंने बताया वो आपको रिवाइज करने हैं. सो दिस इज़ द मैप वर्क फॉर यू. यू विल रिवाइज इट. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.